Hello and welcome in the second video of the ratio. In this video we are going to discuss about the comparison of the ratio. First video में हमने ratios का मतलब समझा था. We discussed about the meaning of the ratios, the duplicate ratio, triplicate ratio. We discussed everything. We practiced different questions. In this video we will discuss about the comparison between two ratios. दो ratios के बीच में हम लोग comparison के बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोगों ने जब रेशियो के बारे में जब हमने पढ़ा था तो टॉप था एंटीसीडेंट एंड द डाउन इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट. तो हम लोग दो रेशियोज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कॉन्सिक्वेंट को इक्वल कर देंगे और उसके बाद जिसका एंटीसीडेंट हायर होगा उसे हम लोग वो रेशियो नेक्स्ट रेशियो से ज़्यादा ग्रेटर होगा. I hope it is clear. So it will be more clear if we do some practice. Now let's see this question, which is greater, 3:4 or 4:5. Now इसे solve करने के लिए we will convert it into the fractions. So 3:4 and 4:5. Now हम लोग ये हुआ antecedent and this 4 is called the consequent. टू कॉन्सिक्वेंट का हम लोग LCM लेंगे. सो वी विल टेक द LCM ऑफ 4 and 5. What will be the LCM of 4 and 5? LCM of 4 and 5, 20. So 20 will be the LCM of 4 and 5. तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. इसे एंटीसीडेंट को इक्वल हमें करना है तो इसके लिए हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. द वैल्यू विल बी द सेम. इफ यू कैन रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड दैट हम लोग इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर, अगर हम लोग इसे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगा. तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. तो क्या होगा 15, 5 3 5 सा 15, 4 5 सा 20. अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4. देन 4 4 सा 16 एंड 4 5 सा 20. तो आप देखिए कॉन्सिक्वेंट इन दोनों का इक्वल हो गया है 20 and 20. तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है? द 16 इज द हायर एंड 15 इज द लोअर. नाउ जिसका एंटीसीडेंट ज्यादा होगा, एंटीसीडेंट जिसमें ज्यादा होगा, द नॉमिनेटर जिसमें ज्यादा होगा वो रेशियो ज्यादा ग्रेटर होगा. ये आप अपने ये पूरी तरह से समझ लीजिए. जिसका एंटीसीडेंट ज्यादा होगा वो रेशियो ही ग्रेटर होगा. देन 16:20 is greater than 15:20. So this would be the answer. Which is greater than? So 16 divided by 20 or the 4:5 is greater. 4:5 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. 4:5 is greater than 3:4. This would be the answer. I hope it is clear. आपको कुछ भी नहीं करना है. आप इन दोनों कॉन्सिक्वेंट का LCM लेना है और LCM लेने के बाद इन दोनों के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है. In the both antecedent and the consequent, we will multiply it with the same number. So whatever will be the product, which ratio you have to find out. Which ratio the antecedent of which ratio is greater. So that ratio would be the greater than the next ratio. I hope it is clear. Now let's see the another question. इस question को आप खुद से solve करें. Solve this question by yourself, and after that I will tell you the answer. Okay, I hope that you have paused the video and solved the question. So let's see the solution of this question. So 3:4. Next one is 1:2.
So take the LCM of 4 and 2. So what will be the LCM? What will be the LCM of 4 and 2? The LCM will be 4. Now if we multiply it by 1, the product will be the same, 3 and 4. Now we can multiply it by 2. We can multiply it by 2, then it will become 1, 2, 1s are 2, now 2 2s are 4. So now the consequent of these two are equal. So which is greater? The 3:4 is the greater one, because the antecedent of this ratio is greater. 3 2 से बड़ा है, इसीलिए ये greater होगा. So 3:4 is greater than 1:2. I hope it is clear. So this would be the answer. This would be the answer of this question. I hope it is clear for everyone. So let's move to the another question. Now let's take some tough questions. So solve this question by yourself. Divide 2400 into the ratio 3:4. I hope that you have solved the question. So let's see the solution of this question. It is a very simple one, although we have not studied solving this question, but you can solve it by yourself also. So we will add these two ratios. 8. So 3:5. 3:5 is 8. So 8 is the total ratio. Now in order to divide it, we have to just multiply. We have to just multiply the 3 divided by 8 multiplied by 2400. 3s are 8, 3s are 24, 300. So 900 would be the first one, the 3 one would be the 900, and 5 divided by 8 multiplied by 2400. So again 3s are 300. Now 1500. So 2400 rupees should be divided into the ratio of 3:5. Now we have to add these two ratios together, and after adding it, we have to find out what is the 1%, what is the 1 ratio. So 1 ratio represents the 300. Now 300 should be multiplied by the 3, then the total amount will come. And again 8 divided by the 2400, the 300 will come. We have to find out what is the value of 1. 8 we have already added. 3 plus 5 equal to 8. Now what is the first part? That means the 3 part and the 5 part together is making 800, and this 800 is representing the 2400. 8वां ये कोई भाग है, किसी का तीसरा भाग और 5वां भाग, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे. तो 8 would be the total part. ये 8 जो है वो 2500 को रिप्रेजेंट करता है. नाउ हम लोग इसे, अगर हम लोग एक की बात करें, व्हाट इज द वन पार्ट? वन पार्ट इज कॉल्ड द 300. वन पार्ट इज 300. तो इसका तीसरा पार्ट कितना होगा? द 900. अब इसका 5th पार्ट कितना होगा? तो 5 3s are 1500. बहुत इजी है. इजीली आप इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. So up to this, thank you for watching this video. In the next video, we are coming with lots of more questions. So keep watching this video and keep practicing. Thank you.